This is Vinita Sharma from Adgully. Yeah, it's okay. It's a wonderful trailer. I have watched it and I'm seriously waiting for the series to come. So yeah, it was a good. Like my editor also told me that the scam which is related to it's a mother of all scams. So accordingly, my first question to you is when this script came across to you. So what was the first thought or reaction in your mind? Actually, like you said, there's not one particular scam that this show is about. I know everybody goes for the obvious, because medical यहाँ पर कहा गया है, तो शायद everybody just hops onto that car. But it is generally about a few things that have been happening for a long time that we've seen, reading in the papers, the news that we watch. तो एजुकेशनल स्कैम के ऊपर है कि कैसे लोगों की छोटा बहुत करप्शन की वजह से लोगों का शिक्षा पे हक उस पे अफेक्ट हो रहा है. What it attracted was obviously the overall script was fantastic. Of course based on true events, लेकिन एक fictional कहानी है जिसमें हम सब अपने अपने किरदार प्ले कर रहे हैं. Very interesting, thrilling script. The director was very clear about what he wants from the actors. And इसमें एक हर किस्म का entertainment है, एक thrill है, एक drama based है, action है. तो what's not in it for for us to get attracted? Right. So after reading it all, what kind of preparation for the character was on your mind? Sir? I just went to the sir went to the gym. Sir joined the gym. No, I liked the script and my character to begin with, and the team which was working on it. मुझे किरदार को समझना वो तो प्रिपेयर करना ही था, एक तबेले में है और वो सब, पर डायलेक्ट बहुत ज़रूरी था मेरे लिए. वो थोड़ा in the beginning I was little nervous about it, but then eventually we got it right. मेरी preparation तो obviously director was right there to guide us through with what he wants, what is required. But हाँ, एक वर्दी पहनी हुई थी तो उसकी जिम्मेदारी है कि आप उससे अच्छे तरीके से निभाएं. There was a lot of action involved in the show, so we had a little bit of training for that. Gun कैसे hold करना है, gun कैसे hold करना है, तो सर ने हमें on set tips दिए थे. और a lot of running, a lot of jumping from one chase sequences हैं, action में बहुत ज़्यादा bullet firing है and all of that. So we got trained on that. Salam sir was action director. तो काफ़ी उन्होंने भी मेहनत की है, हमने भी मेहनत की है, घोड़ा चलाना सीखा. तो आपने क्या मदद की? ज़्यादातर पढ़ने के बाद I use a lot of my imagination. Like I try and tend to imagine the character to be a certain way. And और मैं इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ with the director, like in the idea of the character that I have, I feel that this person will behave like this in this situation, and there's a certain attitude also. I play a teacher who's quite a successful coaching classes चलाता है, and every year students come and they behave, they give him respect and they behave a certain way, and the teacher sort of gets used to behaving a certain way also. And it's also a job of great responsibility, and which I believe so, and also my character also believes so. He's an honest man. So I had some ideas कि इसको ऐसे play करेंगे, ये किरदार, इसका चरित्र ऐसा होगा. So I discussed it with Afzal, and we did a few readings, and then some of my ideas were working. What were not working, you just leave them aside, and then either you have new ideas or you don't really need those ideas. So एक basic foundation लगा लेते हैं, तो उसके बाद then I'm fairly experienced also now. It's been a little over 11 years I've been working, so I can rely on that also. And a lot of it comes from actually reading the script. All these ideas in your head, you may have one or two external ideas that you might bring and say, okay, maybe I can put in this, but sometimes they don't really fit that very well. But कहानी को पढ़ते पढ़ते डायरेक्टर के साथ थोड़ा समय बिता के उनसे बातचीत करते करते बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाता है. You have to make room for this to be part of your life. When it's constantly which is why I say that I use my imagination, because if I like something, then I'm always thinking about it, or I'm talking about it with my friends or my family, or and that
they'll have some ideas. By it becomes part of your life, so then it's more likely that you'll have some really good ideas that you'll come up with that you can use. So this is generally my process. I liked the story, I liked what it was trying to say, I liked the part that was offered to me. I was thrilled by the fact that I was getting to do scenes with Pavanji. Although we were in a film before called Shaitan, we never had scenes together. But I'm also banging my head and thumping my fists on the desk right now because we only have a very few scenes. I won't tell you how many, but very few scenes. And I got to work with Gauahar. We hit it off really well, and it was a really nice bunch of people also. Some of them who you know, some of them you don't know. But then the casting was by Kunal was, I think, quite a successful group of talents he put together. So all of these things also made sense, and I thought that this is good for my career too. So. Yeah, okay. So nowadays, many of the movies or script are picking up from scams and everything related to society. So the thing is, what scene or what fact from the story blowed up your mind? Like, yeah, we don't know this. This is very interesting, and we'll do that. Any scene from the story? I had heard of like a lot of such scams, but you don't know the details. जब script आपके पास आता है तो फिर then you start noticing a few things. Then you, अगर आपको इस चीज़ में रुचि है तो फिर और पता करेंगे कि अच्छा ये इस चीज़ पे आधारित है तो इसका असली केस में क्या हुआ होगा. Like Gauahar was explaining or sort of putting it across that it is a fictional story, but a lot of the scams, the way the story is, it's based on a lot of real incidents, and these kind of incidents have been happening for a long time. And now in the internet age, we are more likely to come across more information about such things. So I can't really pick out one particular thing that I found mind-blowing, but there was one, but if I mention it, then I think it will mislead the audience to think that, you know, my character is based on somebody. So I will not say that. I did find something that was really interesting, but my character is not based on that person. So I don't want to say it because that will mislead people. ओके नो प्रॉब्लम. ओके सर, आप तो बड़े शांत हो. मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी अब. ये जो अभी बॉलीवुड का फेस चल रहा है, यू आर फ्रॉम राइट बिगनिंग देयर. मतलब इतने भी पुराने नहीं हो आप, लेकिन आप हो पहले से. सो द एवोल्यूशन फेज ऑफ बॉलीवुड एंड राइट नाउ द करंट सिनेरियो इज गोइंग ऑन बॉलीवुड. मतलब पिक्चर थोड़ी ठीक ठाक चल रही है, नहीं चल रही है. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? पिक्चर ठीक ठाक चल रही है, नहीं चल रही है, हमेशा होता है. अगर आप ध्यान से देखें तो मोस्ट ऑफ द फिल्म्स डिडंट डू वेल इन हिंदी सिनेमा, यू नो. अगर आप देखें तो आपको सिर्फ हिट्स दिखती हैं. और वो 80s में भी एक फेज आया था कि लगातार फिल्में फ्लॉप हुई थी, पर कह रहे नहीं चल रही है ना. ओम नमः शिवाय चली, मेजर चली, बहुत सारी तमिल और तेलुगु फिल्में डब जो आई, दे डिड वेरी वेल. सो देयर आर ऑडियंस टू वॉच सिनेमा विच दे वांट टू वॉच. वी कांट फोर्स ऑडियंस कि भाई घरों में आओ, घरों से निकलो और ये आकर फिल्में देखो. जो उनको पसंद होगा देखेंगे. जिन्होंने देखा, बहुत सारी फिल्में ऐसी थी कि देखने वालों ने भी बोला कि उनको पसंद नहीं आई हैं. सो वो तो फिल्मों में फेज चलता रहेगा, और चेंज तो हमेशा होता है. आप 50s 60s से 70s में आइए, फिर 80s में आइए. विद टाइम सिनेमा के अप्रोच, अर्ली 70s में मिस्टर बेनेगल एंड other filmmakers like that, they had started certain kind of cinema, you know. फिर that whole thing, it gave you few stars, you know. उनका भी एक star system हो गया था. Then it died down. Then late 80s I got Salim Langda, Bagh Bahadur, and because of that many few films like that. फिर suddenly एक middle of the road cinema शुरू हुआ, where realistic stories जो ऋषिदा पहले करते थे, you know. So ये तो हमेशा चलते हैं. एक टाइम पे बच्चन साहब की फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई थी, जो कभी नहीं होती थी, यू नो. तो वो फेजेस आते हैं, और वो चेंज तो ज़रूरी भी है, चेंज चाहिए भी है. अब सडनली आप स्टोरीज देखते हैं छोटे शहरों की, वहाँ के आंगन, वो गलियाँ, यू नो, वो छतें, वो फैमिलीज़ का आपस में या पड़ोसियों का भाईचारा, जो यहाँ नहीं देखने को मिलता है. पीपल आर गोइंग फॉर दो स्टोरीज ना. बहुत सारी छोटी फिल्में दे डिड वेरी वेल,
सो जो चलनी होगी जिस दिन लगान और गदर एक साथ रिलीज होंगी और लोग बोलेंगे दोनों में से एक चलेगी, दोनों बहुत बड़ी हिट थी। सो जो फिल्म चलनी होगी, और आज अगर नहीं किसी ने देखी तो अगर अच्छी फिल्म होगी तो वो सर्वाइव कर जाएगी, उसको फिर देखेंगे लोग। आई जस्ट लाइक टू ऐड, आपने सवाल मुझसे किया नहीं, बट आई जस्ट लाइक टू, आई डू hold the media also a little responsible for beating the doomsday drum कि हो कुछ नहीं चल रही है, तबाह हो गया. I don't know, for some reason it's become a trend that you know a lot of these things they love writing कि अरे हो गया, साउथ की फिल्में आके झाड़ू मार दिया. 5 फिल्में चली हैं वहाँ से, उसमें भी कह दे के उसे 4 ही हैं जो उसे हिंदी बेल्ट में. साउथ भी तो इसी देश की कहानी सुना उसमें रहा है वो बहुत अच्छी बात है कि पूरा भारत हर किस्म का फिल्म देख रहा है, बहुत अच्छी बात है, सिनेमा के लिए, भारत के सिनेमा के लिए बहुत अच्छा है. बट बीटिंग द डूम्सडे ड्रम कि हाँ अभी बॉलीवुड नष्ट हो गया, हिंदी सिनेमा खराब हो गया, ये हो गया, दैट इज अ लिटिल टू फार फेच्ड. और मैं छोटा था, मुझे याद है, शायद आपको याद होगा सर, 90s में, अर्ली 90s में एक दौर आया था कि कोई भी फिल्म नहीं चल रही थी, फिर दामिनी हिट हुई थी और आंखें एक फिल्म आई थी, 2 फिल्म, कुछ नहीं चल रहा था तब. ये देख चुका है, ये साइक्लिकल है, इट कम्स एंड इट गोज, because this has happened before also, it will happen again. कुछ बड़े स्टार्स हैं जिनकी अभी आई और नहीं चली हैं किसी भी वजह से, उनकी इससे पहले भी फ्लॉप हुई हैं और फ्लॉप्स के बाद एक बहुत बड़ी हिट भी दी है. फिल्म तो 100 साल से चल रहा है, 100 साल से चल रहा है हिट फ्लॉप. सो जिसकी नहीं चली वो चोर बेचारा. वैसे भी आप ध्यान से देख लीजिए, टिपिकल जो मसाला फिल्म्स हैं वो 90% हिट नहीं होती. That's why one big stars once said, एक बड़ी हिट दो, 3 साल सर्वाइव करोगे, फिर एक हिट देना. So आप लोग भी, मीडिया वाले भी, ये हमारे जैसों के लिए टेस्ट है. घंटी बजाना बंद कीजिए. एक भी आप गड़बड़ नहीं कर सकते, बाकी लोग उसके बारे में कोई बात नहीं करता. यू नो, कुछ ऐसी फिल्में थी, फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ा हिट हुआ, सेकंड पार्ट जब 2 आया तो नहीं चला. यू नो, या एक पुरानी फिल्म सेम डायरेक्टर ने किसी एक हीरो को लेकर बनाई थी, हार्डकोर कमर्शियल मसाला फिल्म, बहुत बड़ी हिट थी, अभी फिर रिपीट करके किसी और के साथ बनाई, एक दिन नहीं चली. वो डिपेंड करता है भाई. और कुछ ऐसी फिल्में भी होती हैं जो थिएटर में शायद उतना अच्छा ना करें बिजनेस, लेकिन आज भी आपको वो पिक्चरें बहुत ज़्यादा याद हैं. रॉकेट सिंह, माई डेब्यू फिल्म, बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दैट. थिएटर में नहीं चली बिकॉज इट केम मच अहेड ऑफ इट्स टाइम. टुडे एवरीबडी एंड एवरी इंटरव्यू एंड एवरी पर्सन ओनली टॉक्स अबाउट रॉकेट सिंह. सो good films survive. It doesn't matter really about, you know, how much is the business. I have seen that. I like the part of yours in Rocket Singh, yeah. और चलता रहता है ये फेज, महंगाई मंदी सब डिस्कस होता रहता है. वो पोस्ट फ्राइडे होता है कि यार ये चल दी इसलिए अच्छा था, नहीं चली ये गड़बड़ थी, या ये हो गया, अरे नहीं पसंद की लोगों ने. Okay, so related to same last question, भी movies and all का तो दौर चल रहा है, जो भी चल रहा है, it will take up the peak again. एक और part add हुआ है, that is called OTT. Artists already who were existing in this industry, उनके लिए एक दूसरा phase, दूसरे innings start हुए, new artists discover हुए. So according to you, what is your take on OTT? There's more work for everybody, not only actors, the whole industry. There's more work because there's another medium which is thriving also now. एक और खिड़की खुली है. पहले कम था, टेलीविजन था, फिर सिनेमा था, जो थिएटर करते थे वो थिएटर करते थे, फिर वो एडवर्टाइजिंग की दुनिया थी जहाँ पे करते थे, वॉइस आर्टिस्ट्स अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करके वो करते थे रेडियो वगैरह में. अब एक और एवेन्यू आ गया है और एक बड़ा है, और बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे, ऑलमोस्ट सिनेमा के स्केल पे ही शूट होता है सब कुछ. नहीं, ऑलमोस्ट ही है सिनेमा, थोड़ा वही स्केल पे शूट होता है सर, वही कैमरास, वही क्रू, वही टेक्नीशियंस, वैसे ही एक्टर्स, वो स्केल वही होता है. सिर्फ वो आपको पर्दे पे नहीं दिखाते, जिनको देखना है वो स्ट्रीम करके देख लें पर्दे पे. बट देयर इज डेफिनेटली मोर वर्क एंड आई फील दैट इट्स मोर एम्पावरिंग टू स्टोरी टेलर्स टू टेल स्टोरीज इन लॉन्ग फॉर्मेट. the hours which they get, लॉन्ग फॉर्मेट. even for a script writer, director, actors, आप अपना धीरे धीरे अनफोल्ड कर सकते हैं. टेलीविजन भी लॉन्ग फॉर्मेट है, बट वो एस्थेटिक थोड़ा अलग है. सो हियर योर इट्स मोर liberating, you have more freedom to tell stories. Yeah, right. So with this, I'd like to end my questions. We'll hope that Shiksha Mandal is a huge success. Get a lot of traction in viewership, and all the best to you guys. Thank you so much. Thank you.